Assalamualaikum. In this video we will do the reading and translation of unit number 4 of NBF English, new book for class 9. So let's start. Let's start it. The name of the chapter is Nothing is Impossible, the construction of spectacular Brooklyn Bridge. कुछ भी नामुमकिन नहीं और एक शानदार ब्रुकलिन ब्रिज की तामीर. The Brooklyn Bridge is one of the oldest suspension bridges in the United States. Brooklyn Bridge या जो हम कह सकते हैं Brooklyn पुल रियासत हाय मुत्तहिदा में सबसे कदीम मुअल्लक पुलों में से एक है. So here you can see the suspension bridges. So suspension bridges means मुअल्लक पुल जो इस तरह के नज़र आता है. So these are the different examples of suspension bridges. So let's back towards the lesson. So it connects the New York City boroughs of Manhattan and Brooklyn by spanning the East River. It connects ये जोड़ता है the New York City boroughs, न्यू यॉर्क शहर के की इंतज़ामी इकाइयों को या बल्दिया को of Manhattan and Brooklyn, मैनहट्टन और ब्रुकलिन के बाय स्पैनिंग पार करते हुए द ईस्ट रिवर मशरक़ी दरिया को. सो ये तोड़ की ट्रांसलेशन थी. इकट्ठे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मशरक़ी दरिया को पार करते हुए न्यू यॉर्क शहर के मैनहट्टन और ब्रुकलिन इंतज़ामिया इकाइयों या बल्दिया को जोड़ता है. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोरोज, सिटी बोरोज? द मीनिंग ऑफ सिटी बोरोज इज़ द एरिया विच हैज़ इट्स ओन we can say म्यूनसिपलिटी और ओन मैनेजमेंट, यानी एक ऐसी जगह या एक ऐसा इलाका जहाँ का अपना इंतज़ाम हो. तो उसको हम इंतज़ामी इकाई भी कह सकते हैं उर्दू में या बल्दिया भी कह सकते हैं. It was the longest suspension bridge in the world from its opening until 1903 and the first ever steel wire suspension bridge. ये अपने आगाज़ से लेकर 1903 तक दुनिया का सबसे लंबा मुअल्लक पुल था और फौलादी तारों का पहला मुअल्लक पुल था. Since its opening, it has become an iconic part of the New York skyline. अपने इफ्तिताह के बाद से ये न्यू यॉर्क के आसमान को छूती इमारतों का या न्यू यॉर्क की फलकी लकीर का एक मशहूर हिस्सा बन गया है. ओके, ओपनिंग मतलब अपने, आप इसको अपने खुलने के बाद भी लिख सकते हैं कि अपने खुलने के बाद से, या आप इसको अपने आगाज़ के बाद से भी लिख सकते हैं. आगाज़ के बाद से, खुलने के बाद से, सब ठीक है. सो आइकॉनिक का मतलब होता है, आप इसको उर्दू में कर सकते हैं बहुत ही मशहूर, या जिसको हम कह सकते हैं पहचान, कि ये न्यू यॉर्क की एक पहचान बन चुका है, तो भी गलत नहीं होगा. स्काई लाइन कहते हैं, यानी स्काई लाइन के दो मतलब हो सकते हैं. एक तो ये कि फलकी लकीर, और दूसरा मतलब होता है जो बहुत ऊंची ऊंची आसमान को छूती, को छोटी लिख दिया, आसमान को छूती होना चाहिए था, आसमान को छूती इमारतों, ये तो ये छोटी हो गया, इसको हम ते बना देते हैं. अब ठीक हो गया, आसमान को छूती इमारतों का. ओके, आगे चलें. इट वॉज डेजिग्नेटेड अ नेशनल हिस्टोरिक लैंडमार्क इन 1964. इसे 1964 में कौमी तारीखी निशान नामजद किया गया था. It all started with a wild, crazy, strange looking, strictly speaking, prima facie, a mad dream of a creative engineer named John Roebling. ये सब एक तख्लीकी इंजीनियर जॉन रोबलिंग के एक जंगली या ख़तरनाक, here you can see the word wild. So wild का लफ्ज़ी मतलब तो होता है जंगली, लेकिन आप जब बामुहावरा तर्जुमा करेंगे तो आप इसको ख़तरनाक भी लिख सकते हैं. So ये सब किसी, इट ऑल स्टार्टेड, ये सब शुरू हुआ विद द वाइल्ड, एक जंगली या ख़तरनाक, क्रेजी पागल या दीवाने, स्ट्रेंज लुकिंग अजीब नज़र आने वाले, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी के स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी यानी बजा तौर पर इब्तदाई नज़र में. सो ये जो होता है ना, प्राइमा फेसी का मतलब होता है कि जो पहली नज़र होती है या फर्स्ट लुक. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्राइमा फेसी अ मैड ड्रीम, यानी जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग का मतलब होगा कि बजा तौर पर, यकीनी तौर पर. सो बजा तौर पर इब्तदाई नज़र में एक दीवाने के ख्वाब से शुरू हुआ. सो ये इसका बामुहावरा तर्जुमा होगा. Who was inspired by an idea to build a spectacular bridge connecting New York with the Long Island, जो न्यू यॉर्क को लॉन्ग आइलैंड या लॉन्ग जजीरे से मिलाने वाला एक शानदार पुल बनाने के ख्याल से मुतासर हुआ था. However, ताहम ब्रिज बिल्डिंग एक्सपर्ट्स, तमाम पुल बनाने के माहिरीन ने थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के थॉट सोचा दैट दिस वाज एन इम्पॉसिबल फीट, कि ये एक नामुमकिन कारनामा है. सो फीट मीन्स कारनामा.
یہ ایک ناممکن کارنامہ ہے، اور روبلنگ سے کہا کہ اس خیال کو بھول جائیں. اینڈ ٹول روبلنگ، اور کہا روبلنگ سے ٹو forget the idea کہ اس خیال کو بھول جائے. It just could not be done. یہ بس یہ نہیں ہو سکتا. It was not practical. یہ عملی نہیں تھا. It had never been done before. یہ پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا. In a sense، ایک لحاظ سے John Roebling heard all those age-old criticisms that many of us frequently encounter in our life or career when we try to accomplish something different that appears to be challenging to others. So ایک لحاظ سے جان روبلنگ نے وہ تمام زمانوں پرانی تنقیدیں سنی جن کا ہم میں سے اکثر اپنی زندگی یا کیریئر میں سامنا کرتے ہیں جب ہم کچھ مختلف کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے مشکل دکھائی دیتا ہے. بٹ روبلنگ could not ignore the vision he had in his mind of this bridge. لیکن روبلنگ اس پل کے بارے میں اپنے ذہن میں موجود ویژن یا مقصد کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. He thought about it all the time and he knew deep in his heart that it could be done. وہ ہر وقت اس کے بارے میں سوچتا تھا اور وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے جانتا تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے. He just had to share the dream with someone else. اسے صرف یہ خواب کسی اور کے ساتھ بانٹنا تھا. After much discussion and persuasion, he managed to convince his son Washington, an upcoming engineer, that the bridge in fact could be built. کافی بحث اور قائل کرنے کے بعد وہ اپنے بیٹے واشنگٹن جو مستقبل کے انجینئر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ پل در حقیقت تعمیر کیا جا سکتا تھا. Working together for the first time، پہلی بار ایک ساتھ کام کرتے ہوئے this homely team of father and son، اس باپ بیٹی کی اس گھریلو ٹیم نے یا گھریلو جماعت نے develop concepts، تصورات تیار کیے of how it could be accomplished، کہ اسے کیسے مکمل کیا جا سکتا ہے. and how the obstacles could be overcome، اور رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. with great excitement، بڑے جوش و خروش and inspiration، اور تحریک کے ساتھ and the headiness of a wild challenge before them، اور اپنے سامنے درپیش خطرناک چیلنج یا للکار جو کیا قبول کر جو بریکٹ میں رکھ سکتے ہیں قبول کرنے کی، یعنی کہ قبول کرنے کی للکار before them اپنے سامنے. they hired، انہوں نے حاصل کی their crew and یعنی کہ they hired their crew and began to build their dream bridge. انہوں نے اپنے عملے کی خدمات حاصل کی اور اپنے خوابوں کا پل بنانا شروع کیا. Construction began on January 3, 1870. تعمیر 3 جنوری 1870 کو شروع ہوئی. So for the complete translation and the reading, check the other parts. Assalamu alaikum.